Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Thank you. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jaya Prabhupada. Shri Radha Madhava ki, Srila Prabhupada ki Jai. Jayam Vishnupat Paramahamsa Parivachikacharya Astra Sakta Shri Srimad Divine Grace Lacy Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj Prabhupada ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Shri Gaura Hari Gandharvika Giridhari ki. Shri Narasingha Dev Lakshmi Devi ki. Anandaguri Vaishnava Vrinda ki. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are continuing to read from the fourth canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 29, talks between Nārada and King Praśna. Today we have text number 52. So today will there also be Hindi translation? Yes, like yesterday? Very good. Very good.
Okay. I will do it one time myself and then we'll do it together. Nārada uvāca praśnāram hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha atra me vadato guhyaṁ niśāmaya suniścitam. Nārada uvāca praśna evaṁ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha atra me vadato guhyaṁ atra niśāmaya suniścitam niśāmaya suniścitam Nārada uvāca Nārada uvāca praśna evaṁ hi sañchinno praśna evaṁ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha bhavataḥ puruṣarṣabha atra me vadato guhyaṁ atra me vadato guhyaṁ niśāmaya suniścitam. niśāmaya suniścitam. Please. Nārada uvāca Nārada uvāca praśna eva hi sañchinno praśna evaṁ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha atra me vadato guhyaṁ atra me vadato guhyaṁ niśāmaya suniścitam. niśāmaya suniścitam. Nārada uvāca praśna evaṁ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha niśāmaya suniścitam. Nārada uvāca praśna evaṁ hi sañchinno puruṣarṣabha Someone else? Praśna evaṁ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha atra me vadato guhyaṁ niśāmaya suniścitam. Ladies, anyone? Okay, thank you. Nārada uvāca sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha atra me vadato guhyaṁ niśāmaya suniścitam. Thank you. So let's do the word by word in English and then we do the other things with the translation, just like yesterday. Thank you. Nārada uvāca. Nārada said, praśnaha, question, evaṁ, thus, he, certainly, sañchinnaha, answered, bhavataḥ, your, puruṣarṣabha, O great personality, atra, here, me vadato, as I am speaking, guhyaṁ, confidential, niśāmaya, here, suniścitam, perfectly ascertained. Translation purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. The great Saint Nārada continued, O great personality, I have replied properly about all that you have asked me. Now hear another narration that is accepted by saintly persons and is very confidential. Purport. Sri Nārada Muni is personally acting as the spiritual master of King Parishman.
It was Narada Muni's intention that through his instructions the king would immediately give up all engagement in fruitive activity and take to devotional service. However, although the king understood everything, he was still not prepared to give up his engagements. As the following verses will show, the king was contemplating sending for his sons, who were away from home executing austerities and penances. After return, he would entrust his kingdom to them and then leave home. This is the position of most people. They accept the bona fide spiritual master and listen to him, but when the spiritual master indicates that they should leave home and fully engage in devotional service, they hesitate. The duty of the spiritual master is to instruct the disciple as long as he does not come to the understanding that this materialistic way of life, fruitive activity, is not at all beneficial. Actually, one should take the devotional service from the beginning of life, as Prahlad Maharaj advised, Kaumaraj Charit Pragyo Dharman Bhagavatan Niha, Bhagavatam 761. According to all the instructions of the Vedas, we can understand that unless one takes to Krishna consciousness and devotional service, he is simply wasting his time engaging in the fruitive activities of material existence. Narada Muni therefore decided to relate another allegory to the king so that he might be induced to give up family life within material existence. End of purport. हरे कृष्णा। अनुवाद हिंदी में। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। तात्पर्य: श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बर्हिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे, किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार न था। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर वह उन्हें राज्य सौंपकर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे प्रामाणिक गुरु बनकर उनकी बातें प्रामाणिक गुरु बनाकर उनकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं। गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में न आ जाए कि यह भौतिकतावादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश किया है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, भागवत 7:6-1। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृत्तांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके। Thank you. Om Agyanatimirandasya Gunanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Svabhatandikam Mandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachorine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. So, dear devotees, the, the हरे human कृष्ण form of existence is meant for developing our eternal relationship with Krishna, our best friend. हरे कृष्णा भक्तों, मनुष्य जीवन हमें हमारा भगवान के साथ का संबंध साक्षात्कार करने के लिए मिला हुआ है And it's meant to come to the spiritual platform where we can be eternal, full of bliss and full of knowledge. सो यहाँ इस तरह से हमें आध्यात्मिक स्तर पर आना है जो पूर्ण आध्यात्मिक और पूर्ण आनंद से पूर्ण है And where we can always be with Krishna and serve and love him. जहाँ पे हम लोग भगवान कृष्ण के साथ हमेशा रह सकते हैं और उसको आनंद के साथ सेवा कर सकते हैं So in the in the 11th canto, I guess it was 11th canto Srimad Bhagavatam, this human form of life is compared to a boat. 11वें स्कंद में मनुष्य जीवन की जीवन को With a boat, a ship. एक जो जहाज की तरह माना गया है And this ship, this human form of life, allows us to cross the ocean of material existence यह जहाज हमें सहायता करता है कि भौतिक भवसागर को हम लोग पार कर सकें to reach the shore of the spiritual world. आध्यात्मिक जगत के किनारे तक पहुंचने के लिए And the, the favorable wind, which is pushing the sails of the ship, जो हवा है जो जहाज को आगे खींचती है वो are the instructions of the Vedic scriptures. वेदों की वेदों की आज्ञाएं हैं And the captain of that ship is the spiritual master. और इस जहाज के जो कर्णधार है वो आध्यात्मिक गुरु है So, in this way, uh, if the ship has favorable wind, it has a good captain, then it can cross over the ocean. जो इस जहाज को हम जहाज के लिए हमारे पास हवा है एक कर्णधार है ताकि हम लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं So, in the same way, if we, the soul, in this human form of life, सो इस तरह से हम भी इस मनुष्य जीवन में if we take the help of the Vedic instructions अगर हम लोग शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करेंगे and the guidance of the spiritual master, और सदगुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे then also we will cross the ocean of material existence and we will reach the spiritual kingdom of Krishna. तब जाकर हम लोग इस भवसागर को पार करके आध्यात्मिक जगत तक पहुंच पाएंगे So, this material body is not meant for sense gratification. ये भौतिक शरीर जो मिला है वो सुखोपभोग के लिए नहीं मिला है The senses require some satisfaction, but we should give it as much as it is needed, not more, not less. इंद्रियों को कुछ ना कुछ संतुष्टि चाहिए हमें उनको देना चाहिए लेकिन ना ज्यादा ना बहुत कम Then we can be peaceful and we can nicely execute our duties
in Krishna consciousness. तब जाकर हम लोग शांतिपूर्वक भगवान की सेवा कर पाएंगे। Now I forgot what I wanted to say, but Krishna is the source of memory and forgetfulness. So you can translate. अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ, पर क्योंकि कृष्णा जो है वो स्मृति और ज्ञान के प्रदाता है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। And now I prayed to Krishna and he gave me my memory back. तो भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान ने मुझे मेरा स्मृति वापस दे दिया। What I wanted to say to you मुझे जो कहना चाहता था आपसे, is that Srila Prabhupada explains that in human form of life, we need to do three things. मनुष्य जीवन में हमें, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन में हमें 3 चीज़ करना ज़रूरी है। Perform sacrifice, यज्ञ करना, perform austerity, तपस्या करना and give charity. और दान करना। This will be pious life. ये पुण्यमय जीवन है, This will be progressive life. इससे प्रगति होती है। So a person should not make sins, हमें प्रयास करना चाहिए कि पाप ना करें, because sins, they will just make us suffer and entangle more in this complicated world. पाप करने से हमें दुख प्राप्त होते हैं और ज़्यादा बंधन में बंध जाते हैं हम लोग। So, and as we know from the fifth canto of the Srimad Bhagavatam, Lord Rishabhadev, he was telling to his 100 sons जैसे भागवतम के पंचम स्कंद में हम देख रहे हैं कि ऋषभदेव अपने पुत्रों को आज्ञा कर रहे हैं that all of you should engage in austerity for the purpose of self-realization, कि आप सभी लोग तपस्या कीजिए, जो तपस्या करना चाहिए। Uh, so you should not be attracted for sense enjoyment, which is also available for the hawks and dogs and other animals. और आपने इंद्रिय भोग की जीवन में रत नहीं होना है, जो एक सामान्य कुत्ता और सुअर को भी इजीली अवेलेबल है। So I don't know about the streets of. I have not. I'm first time in Bangalore, but in Vrindavan, I was 3 weeks in Vrindavan. In Vrindavan, you can see huge fat pigs. बैंगलोर में तो पता नहीं, लेकिन मैंने वृंदावन में देखा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े, मोटे-मोटे सूअर रहते हैं। And they seem very happy. और देखे जाए तो वो बहुत सुखी है And they eat everything. और वो सब कुछ खाते हैं। And that's why they're so fat. और इसी वजह से वो बहुत मोटे हो चुके हैं। So, and once it happened that Indra was cursed to become a hawk. तो सो इसी एक एक बार ऐसी हुआ था कि इंद्र को भी श्राप मिला था कि वो एक सूअर बने। And then he forget completely his real identity in the celestial kingdom. सो इसी तरह से वो भूल गया था, इस कारण कि वो एक स्वर्ग में एक राजा है। And then Lord Brahma and demigods, they try to come and invite him back. ब्रह्मा आदि देवगण उसको बुलाने के लिए वापस वहां पे आए, प्रयास कर रहे थे। But Indra was completely in the consciousness of the hawk. पर इंद्र जो है वो पूरी अपनी सुअर की चेतना में लिप्त हुआ था। And then he said, I don't want to go anywhere. I'm very happy here in my pig life. वो कह रहा था कि मैं इस सुअर के जीवन में नहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। So this is how the material nature functions. तो इसी तरह से भौतिक दुनिया कार्य करती है। That the soul in any kind of body that it inhabits feels that this is the best form of existence. जीवात्मा जो है वो किसी भी शरीर में जाने के बाद वो यही सोचता है कि वो उसी जीवन में खुश है। So, but animal life is actually full of suffering, and we should greatly value our human form. सो सारी पशु जीवन जो है वो पूर्ण दुखों से पूरा भरा हुआ है, और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। So only in the human form we can develop love for Krishna. क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम लोग भगवान के प्रति का प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। So the Vedic scriptures tell us that we should do sacrifice.
वेद हमें बताते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। So, and in this age of Kali, what is the best sacrifice? सो इस कलयुग में कौन सा यज्ञ है जो सबसे बेस्ट है? Is that when we use our time and energy to sing the names of Krishna. वो है कि जब हम हमारा समय हम भगवान की कीर्ति गाने में बिताएं। So, this is the Yuga Dharma Sankirtan Yagya. तो यही है जो है वो युग धर्म है, जो संकीर्तन है। So this sacrifice is sufficient to make us happy and connect us with the Lord. सो ये जो यज्ञ है वो काफी है हमें भगवान के पास ले जाने के लिए और भगवान से जोड़ने के लिए। So we chant japa individually, सो हम लोग जपा करते हैं अपने स्वयं के लिए। and and Krishna says in Bhagavad Gita that of sacrifices I am chanting of the holy names, japa. और भगवान यह भी कहते हैं कि सारे यज्ञों में मैं भगवान के नाम का जाप हूँ, जपा हूँ। And then we also do loud chanting, we do kirtan, sankirtan together with other devotees. सो इस तरह से हम लोग जोर से भी हम लोग कीर्तन करते हैं, गाते हैं भगवान का नाम, जिसको हम लोग संकीर्तन कहते हैं। And Srila Prabhupada writes that, and also you can always chant when you're walking on the street, सो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हम लोग कभी भी संकीर्तन कर सकते हैं, जब हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं तभी हम लोग भगवान का नाम गा सकते हैं। when you take a bath, when you take a bath, बात shower, जब हम लोग स्नान करते हैं, um, when you when you drive in the bus, जब हम लोग बस में से जा रहे हैं, so always you can connect with Krishna. हर समय हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। and and then there is charity. Because all of us are doing some kind of work and getting some kind of results. सो इस तरह से और एक चीज है जो है दान, जिससे हम लोग जो भी हमारा अर्जित धन है उसको हम लोग यूज करते हैं। So so the best charity is to um, give your give your resources for the Krishna consciousness movement. बेस्ट है कि जो हमारा जो संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में दे, For deity seva, भगवान की सेवा, विग्रहों की सेवा के लिए, for the preachers of Krishna consciousness, भगवान के प्रचारकों के लिए, for the maintenance of Krishna conscious temples, मंदिर के रख रखाव के लिए, for feeding devotees and people with prasadam, भक्तों को और लोगों को प्रसाद खिलाने के लिए हम लोग uh, for sponsoring the Krishna conscious literature distribution, भगवान नाम के ग्रंथों का वितरण करने के लिए, and so on. और इस तरह से और and and austerity, uh, this is included in Bhakti Yoga. तपस्या भी इस तरह से ऐड कर We सकते। rise early in the morning, जैसे सुबह जल्दी उठना है, attend Mangalarati, मंगल आरती अटेंड करना है, and chant Hare Krishna. भगवान नाम का जाप करना है, So, and then we eat only vegetarian food offered to Krishna. केवल शाकाहारी पदार्थ भगवान को जो ऑफर किया है प्रसाद वो लेना है। So, and all our rules and regulations, these regulate our life, and it's already uh, enough tapasya which will make us pure. सो ये जो नियम कानून बनाए गए हैं हमारे जीवन के लिए, वो सारे हमारे जीवन को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वही एक तपस्या है। so, uh, so these things should be done in the mode of goodness. सो ये सब चीज हमें करना है सत्व गुण में। That means we don't expect any results. We मत, just do them out of duty. मतलब कि किसी फल की अपेक्षा ना करते हुए बस केवल कर्तव्य की भावना से इसको करना है, We do it for the pleasure of Krishna. और हमें इसको बस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। So Srila Prabhupada says that we must come regularly to the temple to see the deity. प्रभुपाद कहते हैं कि हम नित्य रूप से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आना चाहिए, Simply out of duty.
केवल एक कर्तव्य की भावना से to please Krishna. भगवान की प्रसन्नता के लिए आना चाहिए। Actually, we come so that Krishna can see us. हम आते हैं मंदिर में क्योंकि भगवान हमें देख पाए। So it's a form of like service. ये एक सेवा की तरह है। And then we can pray to him for pure devotional service. जब तब हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं भक्ति में। So everything we should do for Krishna's pleasure सब कुछ हम लोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं and for the pleasure of the Guru. और भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। So this kind of life will keep us pure इस तरह का जीवन हमें शुद्ध रखेगा and free from the contaminations of Kali Yuga. और कलयुग के प्रभाव से हमें दूर रखेगा। Actually, if we take shelter of Lord Nityananda's lotus feet, वास्तविकता में जब हम लोग भगवान नित्यानंद का चरणों का आश्रय लेंगे, who comes as Guru, जो एक गुरु की तरह आते हैं, and we follow his teachings, जब उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, then under the shade of the lotus feet of Nityananda, there is no Kali Yuga. नित्यानंद के चरणों के आश्रय में कोई कलयुग का प्रभाव नहीं मिलेगा। So therefore, um, just like devotees in the past achieved perfection by serving their guru, जैसे भूतकाल में भी गतकाल में भी देखा है हमने कि भक्तों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन सफल किया हुआ है। the same principle applies now and forever. वही तत्व आज भी कार्य करता है और आगे आगे भी कार्य करेगा। So, um, and Guru is very pleased if we love and serve other devotees. गुरु भी प्रसन्न होते हैं जब हम लोग बाकी भक्तों को भी प्रेम देते हैं। So, and Bhaktivinoda Thakur says that Jiva Doya Nama Ruchi Vaishnava Seva Sarva Dharma Sar. Yeah, you understand this Bengali, right? So no need to translate. So therefore, we need to show compassion to other living beings. हमें बाकी जीवों के ऊपर भी दया दिखानी चाहिए। We have to be kind to everyone, including the dogs and the animals. केवल जानवरों पर नहीं, जो कुत्ते बिल्ली वगैरह जो है उनको उनके ऊपर दया दिखानी है। And we should try to give others Krishna consciousness. दूसरों को हमें भगवत भक्ति प्रदान करनी है। And and develop taste for chanting Hare Krishna. और भगवान नाम में रुचि प्राप्त करनी है। It is said that when you reach the level of nishtha, then you will never get tired of chanting. ऐसा कहते हैं कि जब हम लोग निष्ठा के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो भगवान नाम का जाप करते हुए हम लोग थकेंगे नहीं। So and Vaishnava Seva, this is very important. So in different kinds of ways, however we can, we should serve the Vaishnavas. वैष्णव की सेवा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, जो भक्ति में आगे बढ़ाती है। So that's the essence of religion. यही शास्त्रों का सार है। So if we do it properly with the blessings of Guru, अगर हम लोग इसको ठीक से करते हैं गुरु की आशीर्वाद से, then we can go from the level of Shraddha, from the faith, we can come to the devotee association and then come to the active devotional service, bhajan kriya. इस तरह से हम लोग निष्ठा के स्तर से आगे बढ़कर भक्तों के संग में आते हैं, साधु संग में आते हैं, बाद में भजन क्रिया के स्तर पर आ जाते हैं। And then come to the anatta nivritti, become cleansed of almost all dirty things. उस तत्पश्चात हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आते हैं, जहाँ पे हमारे जो कल्मश है, जो गंदी चीजें है, उसको दोहन हो जाता है। And then reach the nishtha level. Yeah, we become very fixed. तत्पश्चात हम लोग निष्ठा के स्तर पर आते हैं, जब हम लोग दृढ़ होते हैं भक्ति में। And then if we continue nicely, then comes great taste of holy name. और इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो भगवान नाम में अच्छे से रुचि प्राप्त होगी। So then chanting produces so much nectar
that you want to have a lot of ears and a lot of mouths. सो इस स्तर पर आने के बाद भक्ति और भगवान नाम का जाप जो है वो इतना सुंदर, इतना मधुर लगेगा कि आपको 2 कान काफ़ी नहीं होंगे, आपको लगेगा कि बहुत सारे कान होने चाहिए। And the holy name will dance in the courtyard of your heart. और भगवान नाम जो है वो आपके हृदय के आंगन में नाचने लगेगा। And then if we continue, then we will go uh, to to Sakti, which means that we becoming much more attached to Krishna and to Krishna service. तत्पश्चात हम लोग आसक्ति के स्तर तक पहुंचेंगे जब हम भगवान के प्रति और ज़्यादा आसक्त होंगे, अटैच्ड होंगे। And then already some little glimpse we can have of our eternal nature in Krishna's Leelas. तो उस तत्पश्चात उस समय हमें भगवान की लीलाओं का थोड़ा-थोड़ा दर्शन होने लगेगा। And then we continue, we can go to Bhava when we start to feel true spiritual emotions towards Krishna. तो इस स्तर में हम लोग भगवान के प्रति और हमारा अटैचमेंट के साथ भक्ति और आगे बढ़ाएँगे। And then comes Krishna Prema. तब मिलेगा हमें कृष्ण प्रेम। So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains these stages in very nice detail in his book Madhurya Kadambini. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन सारी स्थितियों को अपने बुक माधुर्य कदम्बिनी में बहुत अच्छे से समझा के दिया है। So this is a very nice book which explains the path and also different obstacles and how to overcome them. सो इस किताब में, इस ग्रंथ में पता चलता है कि किस तरह से हमारे भक्ति में बाधाएं आती है और उसको किस तरह से हमें उसको पार करना है। So because we are meant to gradually actually come to level of full love of Godhead. क्योंकि एक्चुअली हमें आना है भगवान पर, भगवत प्रेम के स्तर तक हमें पहुंचना है। And until we come, we must listen to Guru and take his guidance how to gradually throughout our life go through all these stages. And if we do it sincerely, all help will be given to us. तो इस तरफ हमें जब तक हम लोग भगवत नाम, भगवत प्रेम तक के स्तर तक नहीं पहुंचते, हमें चाहिए कि गुरु की आज्ञाओं का कड़ाई से पालन करते रहें और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें। If we are truly humble अगर हम सच में अगर हम लोग नम्र हैं, and respectful to all living beings, सो बाकी जीवों के प्रति अगर हम लोग सम्मान सम्मान का भाव रखते हैं, then we can always chant holy name. तब हम भगवान का नाम हमेशा जाप कर सकते हैं। And then we will see that we will get help from Guru, we will get help from Krishna, we will get help from everywhere. तब जाके हमें मदद, गुरु से मदद मिलेगी, भगवान भगवान से मदद मिलेगी, सब जगह से हमें मदद मिलेगी। Because a devotee who is serious about developing bhakti, for him or her will be no real obstacles. क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है, भक्ति प्राप्त करता है, उसके लिए कोई बाधाएं नहीं है। Because if we are sincere, then nobody can stop us in अगर हम bhakti. लोग अगर हम लोग प्रामाणिक है तो कुछ भी हमें रोक नहीं सकता भक्ति प्राप्त करने And in any situation, you can develop bhakti. से। और किसी परिस्थिति में भक्ति प्राप्त करके ही रहेंगे। And no external force can stop you. और कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती फिर। So this is the special power of bhakti. तो ये विशेष शक्ति है भक्ति का। Uh, so yeah, we should take advantage of what we have gotten from Guru. We should take advantage of what we have received from Guru. सो गुरु से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसका हमें फायदा लाभ उठाना है। And then you will have a blissful existence every single day until you die. सो इससे हम लोग प्रतिदिन आनंद की अनुभूति कर पाएंगे And then you go to Krishna. और भगवान के पास हम लोग वापस जाएंगे। So um, and then it's very important that we do this for our own benefit and also for the benefit of others. हमें चाहिए कि ये हमारे स्वयं के लाभ के लिए हम लोग ये करना है और साथ साथ दूसरों के लिए लाभ के लिए भी हमें इसका प्रचार करना है।
we should turn this material planet into Vaikuntha, into Vrindavan. हमें चाहिए कि इस भौतिक जगत को हमें वैकुंठ जगत में परिवर्तित And करना है। it will happen if more and more people will start to follow Krishna's teachings. और ये होकर रहेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो भगवान नाम का जाप करेंगे। And if we make endeavor for that purpose, if we make an effort for that purpose, अगर हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो then then hmm, even then we already will experience uh, the spiritual world here, even if there is so much Kali Yuga going on. तब जाकर हम लोग इस कठिन अवस्था में भी आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर पाएंगे। So we should always do more hearing and chanting, and this will give all perfection. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन, श्रवण और जाप करते रहना चाहिए। So, dear devotees, do you have any questions or comments? सो भक्तों, और कोई प्रश्न है आपका? Be kind to others. Okay. प्रभु जी का प्रश्न है कि किस तरह से ये गुण जो दूसरों के प्रति सद्भाव रखना है, दूसरों के प्रति दया भाव रखना है, ये सारे गुण हम कैसे ले आ पाएंगे? So, it's a very practical question. ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। Yeah. It sounds the same in Hindi. Practical prashna, yes. Okay, so, well, first of all, we should pray to Krishna that please bless me with these qualities. भगवान से प्रार्थना करेंगे हम लोग कि हमें ये क्वालिटीज, ये गुण हमें दे। And then we should do everyday practice. और हमें इसका प्रयास भी, अभ्यास भी हमें प्रतिदिन करना है। So, for example, um, if a sportsman is doing his exercise regularly, जैसे कि एक खिलाड़ी होता है जो डेली अभ्यास करता है, उसका प्रैक्टिस करते रहता है, then gradually he will become very strong. तो धीरे धीरे वो शक्तिशाली बन जाता है। So also, if we read what is forgiveness, how to be kind, and then we practice this like mechanically, but gradually, if we do it sincerely, then gradually it will increase the quality and the quantity of our forgiveness and respect to others. तो चाहिए कि इन गुणों के बारे में पढ़े, पढ़कर उसका उसका प्रयास करे, उसका उसका अभ्यास करे, और चाहे यांत्रिक रूप से क्यों ना हो, उसका प्रयास करते रहें, करते रहे, करते करते हम लोग उसको प्राप्त कर पाएंगे। Yes, and we should more um, associate with such personalities who already have more developed such good qualities. साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का भी हमने संग करना चाहिए जिन्होंने ये गुण पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं, And we should serve them. और उनकी सेवा करनी चाहिए। So basically, there is real ego and false ego. Yes. देह में दो चीजें होती हैं, एक तो है सत्य अहंकार और एक मिथ्या अहंकार। So we should do according to real ego. We should do what is right, and we should avoid that which is not right. हमें देखना है कि क्या हमें सत्य अहंकार के द्वारा हमें पता करना चाहिए क्या सही है, और जो गलत है उसको हमें अवॉइड करना है। So every day, then we should consciously see that in every situation, I will practice to express kindness, express respect, and try to avoid expressing envy and expressing disrespect. हमें अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन कि किस तरह से हम दया, सद्भाव इनको हम लोग प्रकट कर पाएँ, और जो भी एनवी मतलब मत्सर और Uh, सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग उसको प्रकट ना करें, उसको दबा के रखें। and also, the more
we follow the standard process of Krishna Bhakti. That means we rise early, chant 16 rounds, eat only prasad, do our service. This process itself naturally, gradually will awaken all good qualities in us. सो भक्ति के नियमों का हमें पालन करते रहना चाहिए, जैसे सुबह उठना, जपा करना। तो ये सारी जो नियम पालन करते हुए सारे गुण अपने आप में प्रकट हो जाएंगे। Um, all the good qualities already are there in the heart, but they need to be awakened. एक्चुअली सारे गुण हमें ऑलरेडी पहले से ही है, पर हमें उनको प्रकट करना है, जागृत करना है। But if we see that we are lacking, and if we do also extra effort, like I explained, practice every day, then and then it will help very much also. जो भी गुण हमारे में नहीं है उनके लिए भी हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रयास करना चाहिए, करते करते सारे गुण हम प्रकट कर पाएंगे। Does that help? ये काफी। Hare Krishna. हरे Thank you कृष्ण। for an excellent and very relevant question. We all धन्यवाद। need to become more respectful and more friendly. And this is for our own benefit. Because if we are kind to others, then we will progress. But if we are not, then we just put an obstacle for our own happiness. जब हम लोग स्वयं के लिए स्वयं इस दया भाव का और इन गुणों का प्रैक्टिस, गुणों का प्रभाव प्रयास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तभी हम लोग भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। Of course, if you are a kshatriya, लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, then your kindness mean in some situation your kindness means that you have to chastise someone. तो कुछ परिस्थितियों में अगर क्षत्रियों के लिए होता है कि उनका दया दिखाना मतलब दंड देना भी होता है। Yes, this is your dharma, your duty. But it's not done out of envy, but it's done out of duty. So, and that's something. So sometimes we also need to chastise someone, but it should be done according to the proper position. यही उसका धर्म है। तो इसीलिए किसी किसी जगह में दया दिखाना मतलब दंड देना भी होता है और कभी दया दिखाना होता है। But generally, in most situations, we know we don't have that kind of situation. So we can practice so nicely, kindness and friendliness. पर नॉर्मली सामान्य सामान्य स्थिति में हमें हमेशा दूसरे प्रति दया दिखानी ही चाहिए। Yes. So yeah, if some demons attack, then forget about kindness. Then you must you must protect. You must protect, and then that is proper. So just just mentioning that there are such situations also. जब कभी एक दानव राक्षस अगर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तब काइंडनेस या दया दया दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें प्रोटेक्शन, हमारे स्वयं की रक्षा करनी ही चाहिए। So anything else? और कोई प्रश्न? How to what? What? Tasting, chanting. Okay. भगवान नाम में रुचि प्राप्त कैसे करें, प्रश्न है। Yeah, that's a very tasty question. ये बहुत रुचिपूर्ण प्रश्न है। So again, we have to very much show Krishna our desire. We have to pray to Krishna. Please give me taste. Please give me taste. Please give me real taste of serving your holy name. तो हमें भगवान के प्रति बहुत ही उत्कंठापूर्वक प्रार्थना करनी है कि मुझे थोड़ा तो एटलीस्ट रुचि मुझे प्रदान करें। And then we should try to chant with the mood of service and love very attentively, and trying to give Krishna like love and service. And so if we follow these basic things, then the taste will increase. सो हम लोग जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब हमें पूरे ध्यान पूर्वक उसका जाप करना चाहिए और अटेंटिवली ध्यान से हमें करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हमें गुण भगवान के प्रति का रुचि प्राप्त होगा। And also, if we show compassion to other living beings by trying to give them holy name, and we serve the Vaishnavas, this will also increase our taste, because Krishna becomes satisfied. And holy name is a person. तो दूसरे के प्रति अगर हम लोग दया दिखाएंगे, दया कैसे, जैसे भगवान के नाम का उनको
भगवान का नाम जाप करवा के देके और साथ ही साथ बाकी वैष्णवों की सेवा करके भी हमें भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ सकती है। And uh, and also that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur book Madhurya Kadambini, we should see Shraddha Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Narta Nivritti, Nishta Ruchi. So we should see where are we, which level. There are given symptoms, and we should see how can we progress. सो यहाँ पे भी हम लोग देखना है, हमें स्वयं को एनालाइज करना है, समझना है कि हम लोग किस स्तर पे है। जिस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया है कि श्रद्धा और जो लैडर थी बताई थी, उसमें हम लोग किस स्तर पर हैं और कैसे हम लोग इसको आगे बढ़े, उसको हमें देखकर रुचि के स्तर तक पहुंचना है। That is my answer to you. जी। So, dear devotees, you mentioned yes that we can go a little bit over time. It has been now 12 minutes more. Hare Krishna. Okay, I would, um, since we can go a little bit over time, if there is no more questions, I just want to tell you one last story for the conclusion, if you like. थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करने की मतलब करने का परमिशन था, तो आगे बढ़ने की इच्छा करता हूँ। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कहानी एक घटना बताने की इच्छा करता It's about charity, about giving charity, हूँ। इट्स giving charity. दान देने के बारे में Yeah. है। So it was about 3 weeks ago. No, 3 weeks ago when I was in Vrindavan. 3 सप्ताह पहले जब मैं वृंदावन में था, Then I went to the Shri Radha Damodar temple. तब मैं वहाँ पे श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में गया। So as you know, that's the place where there is Rupa Goswami Samadhi and where Srila Prabhupada used to live. आपको जैसे पता है कि वहाँ पे रूप गोस्वामी का समाधि है और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का घर भी है, रूम भी है। So I went to the room of Prabhupada, मैं प्रभुपाद जी के रूम में गया and it was so good to see Prabhupada there. और वहाँ पे प्रभुपाद के दर्शन करने से बहुत अच्छा लगा। And there was a donation box. तो वहाँ पे एक दान पेटी भी थी। So uh, I thought I will make donation. सो वहाँ पे मैंने दान किया। So I put there 50 rupees. वहाँ पे मैंने 50 रुपए डाले। And then I was suddenly thinking, why am I donating so little amount, only 50? तब मैंने सोचा कि क्यों मैं इतना कम राशि में दान कर रहा हूँ। Somehow I felt I should give more. तो किसी तरह से मुझे भावना आई कि मैं ज़्यादा देना चाहिए। And then I thought, okay, I will give more for the deities. तो तब भावना आई कि हाँ, मैं ज़्यादा दान करूँगा लेकिन विग्रहों के लिए करूँगा। Then I went to the temple room. तब जाके मैं विग्रहों के पास गया। I was looking at Shishi Radha Damodar. मैं श्री श्री राधा दामोदर जी के दर्शन किया And I could feel some special inspiration. तब जहाँ पे मुझे वहाँ पे एक विशेष प्रेरणा मिली। It's like from inside, like give 500 rupees. कि अंदर से प्रेरणा आई कि दो भगवान को 500 रुपए दो। And then I took this 500 and I went and put there in the donation table. तब जाके वो 500 रुपए उठा के मैंने दान पेटी में दिए। And then immediately I was about to leave the temple. और तुरंत उसके बाद मैं मंदिर से बाहर निकलने लगा। But then there was one servant of the deities. तब वहाँ पे एक भगवान का एक सेवक वहाँ पे मिला। And he said, "Oh, Hari Bol, wait." उन्होंने बुलाया, हरि बोल रुकिए, I said, "Come back." वापस आइए। So I came back, तो वापस गया मैं। and then he brought a garland from the deities for me. तब जाके उन्होंने भगवान के विग्रह से एक माला लेके आए। And then I felt uh, that actually, well, I took it like this, that Sri Radha Damodar, that they inspired me to give more donation, because that was the way how they could give me something back. They wanted to give me something like a gift. I felt it. They wanted to give me the gift, and for that purpose, I had to make this step.
तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, भगवान मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान ने मुझे कुछ देने के लिए प्रेरित किया। And I felt so happy having that garland, like this personal gift from deities. सो मुझे कितना अच्छा लगा कि भगवान के विग्रह से कुछ ना कुछ एक विशेष चीज मुझे मिली है। So then I wanted to go away. I wanted to leave, तब उसके बाद मैं निकलने के लिए इच्छा किया। but then the puchari said, "Wait." फिर से पुजारी ने बोला रुकिए रुकिए। Then he told to the other puchari, तो उसने दूसरे पुजारी के बारे निर्देश किया, it's like, Mahaprasad. महाप्रसाद। And then he gave me a nice box which was full of Mahaprasad. तब मुझे एक भगवान से एक विशेष बॉक्स मिला जिसमें पूरा And, महाप्रसाद भर के था। and then I felt even more happy तब मुझे बहुत आनंद हुआ because I felt that the deities like personally want to give me this gift, prasad. तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि भगवान विग्रह जो है वो साक्षात रूप से स्वयं से कुछ दे रहे हैं। Uh, yes, and that felt very good. तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। Uh, yeah, now I remember this. Uh, I become again so happy. ये भावना बड़ी अच्छी थी और मुझे ये इससे बहुत प्रसन्नता हुई। So Krishna is a person, भगवान एक व्यक्ति है, and he's looking for a personal relationship. सो एक व्यक्तिगत संबंध भगवान चाहते हैं। So and our processes are the ways of connecting that relationship. We need to do these things, and through this it starts to work. ये जो पद्धति है ये इस रिश्ते को, इस संबंध को उजागर करने के लिए है और इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। So this was my small story. ये हरी हरी Harival, Harival, thank you. So dear devotees, please kindly give me your blessings that I can nicely continue develop my relationship with Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण Wow. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare. Thank you so much. And thank you for your attentive participation. धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे सहभाग के लिए। So we wish everyone a very good day in Krishna service. We wish you a very good day in service of Krishna. आपको आज का दिन भगवान की सेवा में लगे, प्रार्थना करते हैं। And I feel that they are calling everyone for prasad. सो भगवान सभी लोग भक्त सभी को प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, घंटा बजाएं। And Krishna wants to give everyone prasad. सो कृष्ण भगवान सभी को प्रसाद देना चाहते हैं। Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada Jagat Guru ki, Ananta Gauri Vaishnava Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Vo.